Yes, good morning, students. Uh, I hope you all are very well. And today we are going to start a new chapter, chapter number 12, bank reconciliation statement. Because there are so many students who are having some doubts in this chapter. So, this chapter, the main motive of this chapter, first of all, this chapter carry 8 marks, okay? Or it may be for 6 marks plus 4 marks. So I hope you can understand the weightage of this chapter. या तो ये चैप्टर आपको 8 मार्क्स में कवर हो जाएगा और इट मे बी फॉर 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स. So I think class you all are get my point that why we are doing this chapter, because this chapter play a very important role. Clear? So everyone just open a page number, chapter number 12. Please open it. Chapter number 12, everyone. Okay. Before that, am audible to you? My voice is clear or not? Or is there any disturbance in my voice? Yes, students, please reply. So that's why we can start this chapter. I'm also waiting for some more students who can join us, and further that we will start this topic. Okay, very good. Okay, just wait for 1 or 2 minutes. Then after that we will start our topic. Because I'm waiting for some more students. Till now only 8 students are there. Just wait for some other students. Just 2 or 3 minutes. Then after that we will start this topic. And I also know that there are so many students who are in early morning batch who have also done this chapter, a bank reconciliation statement. But if still you are having any doubt, then you can tell me. And one more thing is that yesterday we have done a ledger chapter. And in your ledger chapter, do you have any doubt? Yes, any doubt, anyone? Regarding real, nominal and personal accounts? Yes, anyone? Any doubt regarding chapter ledger? Okay, students, so let's start. A bank reconciliation statement. In this chapter, what we have to do, we know that in our banking, we are having a different types of bank accounts. Okay, and you can say, you can also know about that. What are the types of saving accounts? Okay, current account, fixed deposit account, RD account, MODS account. Do you know this thing? Yes. Do you know about the various types of accounts for a different individual point of view? As we know that for a salary person point of view, the person who earned a salary from the employer, उनके पास होता है saving account. And from a company point of view, they are having a current account. Or if you want to save your money, if you want to invest your money, and you want to receive high rate of interest, so in this case, you will prefer FD account and RD account on the monthly basis. जहाँ पे आप by every month you have to submit some money for your business purpose, for your own purpose, for your investment purpose. या फिर आप कहते हो आपको फ्यूचर की सेविंग करनी है, तो उस केस में you can refer RD account. In this case, यहाँ पे आप क्या करते हो by every month, okay, by every month you will submit your money in your bank account and it will automatically debit your saving account and that will be transferred to your RD account. ये भी एक फैसिलिटी होती है जिसको आप बोलते हो ECS.
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होती है स्कीम, जिसके थ्रू आपकी ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट से एवरी मंथ वही सेम अमाउंट आपकी आरडी में ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप चाहे तो ये भी एक ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल करवा सकते हैं। लास्ट वन एक मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, ये भी एक ऐसी ऑप्शन होती है यह जहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑफर्स दी जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ऑप्शन होती है लाइक सेविंग अकाउंट प्लस एफडी अकाउंट। तो ये तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन थी रिगार्डिंग योर बैंक। ओके, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक के टाइप्स ऑफ अकाउंट, आई थिंक यू हैव आल्सो डन दिस थिंग इन योर बिजनेस स्टडीज चैप्टर, बट इन योर अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकाउंट, एंड अ बिजनेस मस्ट हैव टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, that is just for business point of view. So in this case I am talking about only one account, that is current account. Clear? So in this current account what we have to do, we know that we are having, वैसे तो ये सेविंग अकाउंट में भी आपको पासबुक रिसीव होगी, बट we are doing a chapter bank reconciliation statement, and business has to prepare a bank reconciliation statement for analyzing of funds at the end of each month. यहाँ पे end of each month, a business want to cross verification of their passbook with their cash book. So in this case what a business want to do, a business wants that कि इन दोनों का बैलेंस जो है वो मैच होना चाहिए आपस में एंड ऑफ ईच मंथ। क्लियर? एंड ऑफ ईच मंथ a balance of cash book must be matched with balance of passbook. So in this case we know that a passbook which is maintained by a banking organization, by bank, but a cash book is maintained by a business organization. Is it clear to everyone? That is the basic introduction of this chapter. Very simply, a bank reconciliation statement, a business organization have to match their passbook with their cash book balance, because they want to know how much the funds of how much the inflow of the funds and how much the outflow of the funds during end of the each month. यहाँ पे मंथली बेसिस पे वो उसको मैनेज को मैच करता है, क्या वो ट्रांजेक्शन हमारी मैच हो रही है कि नहीं हो रही, किसके साथ, पासबुक को कैश बुक के साथ। क्लियर? तो इन दिस केस अगर तो मैं बोलूं कि पासबुक है, पासबुक एक ऐसी बुकलेट होती है जो बैंक ऑर्गेनाइजेशन जब भी बैंक ओपन करवाती है तब आपको वो एक पासबुक देती है, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आप बोलो कि सर हमें आफ्टर 3 मंथ वी नीड अ न्यू पासबुक, देन बैंक विल चार्ज 100 रुपीज फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो बैंक वो चार्जेस लेगा अगर नई से पासबुक आपको चाहिए होगी। बट फॉर द फर्स्ट टाइम बैंक विल इशू अ फ्री ऑफ कॉस्ट पासबुक टू ईच अकाउंट होल्डर, चाहे वो सेविंग अकाउंट होल्डर हो, चाहे वो बिजनेस अकाउंट होल्डर हो, एनी टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर। इन द केस ऑफ कैश बुक, अब पासबुक तो मेंटेन, जितनी भी पासबुक पे एंट्रीज होगी दैट इज रिकॉर्डेड बाय अ बैंक, ये बैंक रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डेड बाय अ बैंक। But all the entries inside the cash book has been recorded by an accountant or a person who are working on the behalf of a company. वो चाहे वो अकाउंटेंट हो कंपनी के बिहाफ पे वर्क कर रहा है, चाहे वो कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कंपनी के लिए काम कर रहा है, on that basis they have to prepare a cash book. And we also know that cash book having so many types, single column cash book, double column, triple column, even a 4 column, even a petty cash book. So there are so many types of cash book in this case. अगर आप बोलो सर हमने सिंगल कॉलम भी किया, डबल कॉलम भी किया, ट्रिपल भी कर लिया, ये 4 कॉलम वाला कंसेप्ट कौन सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। 4 कॉलम्स में आपको क्या होगा, एक होगा कॉलम कैश का, एक होगा किसी वन बैंक का, एक होगा किसी और बैंक का, और एक होगा डिस्काउंट का कॉलम। ओके, दैट इज आल्सो बाय अ कैटेगरी ऑफ 4 column cash book. A cash column, for example PNB Bank, for example ICICI Bank, and a discount column, discount allowed and discount received. Is it clear to everyone the basic introduction of this chapter, bank reconciliation statement?
Yes, any doubt beta? Students, any doubt? Is it clear to everyone that what is the meaning of this chapter, the importance, the weightage of this chapter, each and everything? Yes, anyone, any doubt in this basic introduction of a chapter? Okay, very good. Okay, so next thing is that, okay, so next thing is that in this chapter, we know that we have to match a balance between our passbook with your cash book. ओके, या तो आपकी कैश बुक बैलेंस मैच होनी चाहिए या तो आपका पासबुक बैलेंस। इन दोनों का बैलेंस जब तक मैच नहीं ना होगा बेटा, तब तक आप कहोगे कि सर वी आर व्हाई वी आर डूइंग दिस चैप्टर। सो the balance of this thing and balance of this thing must be matched with each other. So I'm saying this thing. But how is it possible? But there are some errors, there are some problems that happens during this chapter. So please send the notes of this chapter. Okay, Akashta, don't worry. I will definitely send you notes of this chapter, even with the. Okay, don't worry. Ashri, very good morning, beta. Okay, don't worry. The notes of these chapters are very easy. You can also watch this video. We will also define each and everything from your notes in this chapter on this smart class, on this YouTube live class. Don't worry. Okay. So नॉर्मली आपका क्या होगा बेटा, इन दिस केस आपको क्वेश्चन आएगा दो चार केसेस में। यू आर हैविंग अ 4 केस इन दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हैविंग अ बैलेंस ऑफ कैश बुक। ओके, कैश बुक का बैलेंस जो आपकी होगा एक प्लस फॉर्म में होगा, यानी कि जिसको आप बोलते हो फेवरेबल। ओके, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक से आपने स्टार्ट करना है, आपने उसको मैच करना है विद फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। So that is your first case. आपने ये start करना है। Case number 1, starting from your favorable balance of cash book and ending with your favorable balance of passbook. So it means आपके पास ये information available होगी. We are having some more information besides these, and automatically we will get the answer of favorable balance of passbook. That is the first case. Now, from the second point of view, second case, you are having a favorable balance of passbook. Clear? और आपके पास ये फिर से ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी डिसाइड दिस, एंड एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर दैट इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो पहला केस स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेकंड केस इज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इज फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट टू केसेस आपको कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्वेश्चन यू आर हैविंग अ कैश बुक फेवरेबल बैलेंस and you are having some more information that you have to add or subtract those information. Clear? Sometimes you have to skip a particular information because that transaction is not related with your that transaction is not related with your relevant month, because that may be for the next month, that it may be for the previous month. तो जो आपके उस पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड नहीं है ट्रांजैक्शन, आपने उसको स्किप भी कर देना है, या तो प्लस करोगे या तो माइनस करोगे या तो स्किप करोगे। वी आर हैविंग ओनली 3 केसेस। ओके, आफ्टर दैट ये आपका फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, फेवरेबल बैलेंस एज पर अ पासबुक। इन दिस केस you also have a same information, okay, and
By entering these value, you will get the final value that is favorable balance as per cash book. तो ये थे हमारे फर्स्ट केस, ये था फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेकंड केस फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन, थर्ड केस में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपके पास ये होगा एक नेगेटिव वैल्यू में है, माइनस में, जिसको आप बोलते हो अनफेवरेबल कैश बुक बैलेंस. A same technique, same information is available, you will finally get the unfavorable balance of your passbook. ये आपके पास unfavorable balance आ जाएगा. And the fourth case is that आपके पास ये वाली unfavorable balance available होगा. And finally, you will get the value of by entering these values, and you will finally get answer of unfavorable balance of your cash book. So only these are the four main types of cases in this chapter. So that is just a basic introduction of this chapter. Is it clear to everyone that what we have to do in this chapter? Yes, that is just a highlights of this chapter, not in detailed information. आप कोई भी मूवी देखते हो ना, जब मूवी सिनेमा में देखने कब जाते हो, जब आप उसके लिए पहले टीजर देखते हो, then you have to watch a trailer. अगर ट्रेलर अच्छा लगा, then you will watch this movie. So that you can say that it's a part of your trailer. Is it clear? Do you like it or not? Yes. How is the trailer of this chapter? Is it interesting or not? Okay, very good Dilbag Singh. Very good Amit. Okay, so now we are going to start a movie of this chapter, a chapter bank reconciliation statement. Okay, तो हम start करने जा रहे हैं, but we are having some rules or some information कि ये जो बैलेंस है जो आपस में मैच नहीं हो रहे, तो उसका रीजन क्या है? What are the main reasons behind that the cash book balance is not matched with your passbook balance? So in this case, those are the main reasons. You can also refer page number 12.2 from your book. Okay, 12.2 page number from your book. There are so many reasons. Okay, the first main reason is that error due to timing. Okay, errors due to timing. अब टाइमिंग का केस क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट पासबुक एंड कैश बुक, वी आर हैविंग ओनली दीज टू टाइप्स ऑफ बुक इन दिस चैप्टर. अब कहता है ये दोनों का बैलेंस मैच नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग. हाउ इज इट पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल आपने चेक इशू किया बैंक को, लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक नहीं गई, यानी कि आपने चेक तो दे दिया, आपने पासबुक में तो रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, लेकिन अभी तक पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई, तो पासबुक से वो बैलेंस गया नहीं अभी तक. तो यानी कि वो बैलेंस आप क्या करोगे? प्लस कर लोगे. तो नॉर्मली मैं सिंपली आपसे एग्जांपल शेयर करता हूं. फॉर एग्जांपल मेरा एक अकाउंट है आईसीआईसी बैंक में. ओके, मेरा बिजनेस भी है उस केस में. मैंने क्या किया? एक चेक इशू किया. ओके, बट उस जो चेक मैंने इशू किया, फॉर एग्जांपल मैंने हर्षिता को वो चेक इशू किया. ओके, हर्षिता फ्रॉम +1 ई, बट हर्षिता ने अभी तक वो चेक अपने बैंक अकाउंट में सबमिट नहीं किया. मैंने पहले क्या किया था? कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड किया था चेक इशू कर चुका हूं, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट तो नहीं डिडक्ट हुई ना. तो until and unless the payment is not deducted, तब तक वो आपके पासबुक में बैलेंस क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, आपका बैंक से वो पैसा नहीं घटेगा. तो ये दोनों ट्रांजैक्शन, चेक इशू करने के टाइम या फिर डिपॉजिट करने के टाइम, ये सेम डे तो होता नहीं कभी भी. ओके, सेम डे उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता. तो उस केस में जब वो टाइमिंग में डिफरेंस आता है, दैट्स व्हाई दिस एरर अकर्स कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होगा. इज इट क्लियर? So that's the main thing is that balance is not matched just because of due to timing. Okay, ये होता है फर्स्ट केस दैट इज रिलेटेड विद योर टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, जिसमें चाहे तो चेक इशू हो जाए या फिर चेक डिपॉजिट हो जाए, एनीथिंग एल्स. Okay, any doubt, any query, anyone want to say anything? Okay, students, any please, if you want to say anything, then you can ask me. You can chat here. Anyone? Okay. So second thing is that transaction error arise just because of transactions.
recorded by bank directly. Okay, so sometimes we are not aware about that the bank had directly deduct our accounts or directly debit some interest in our account. So in that case हमें वो इन्फॉर्मेशन कब पता चलती है? हम क्या करते हैं, पासबुक में तो उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है. फॉर एग्जांपल बैंक ने एटीएम चार्जेस लगाए तो माइनस किया 50 रुपीज. ओके, चेकबुक चार्जेस माइनस 100 रुपीज. बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट दीज चार्जेस. हाउ विल वी कम टू नो व्हेन वी विल विजिट our bank and we will ask the bank authorities that we need a updated passbook history. जब आपको बैंक अपडेटेड हिस्ट्री आपके पासबुक पे प्रिंट करेगा, मैं आपसे शेयर करता हूं हाउ योर पासबुक लुक्स लाइक. प्लीज वेट. ओके, फॉर एग्जांपल दैट्स अ सैंपल ऑफ योर पासबुक. In this case, on this side you are having a photograph, and in this side it's your personal information, your name, your bank account number, your customer ID number, your official address, your home address, your telephonic number, your contact number, and your email ID. So that's a sample of your passbook. On the front side, a logo of the passbook, and the internal side of first page of this side, a photograph and your personal details. Each and everything is there. Okay. एंड फ्रॉम द सेकंड पेज, जैसे मैंने ये सेकंड पेज ओपन किया तो बैंक क्या करेगा, टू दिस पेज दैट विल एंटर इनटू पर्टिकुलर मशीन. आजकल मशीन्स आ गई हैं जिसमें आपको बैंक के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से फेस टू फेस होने की कोई जरूरत नहीं. यू जस्ट हैव टू इंसर्ट योर पासबुक इन योर पर्टिकुलर मशीन. जैसे कि आप एटीएम इंसर्ट करते हो, इन लाइक सेम वे आप पासबुक भी इंसर्ट करोगे. और वहां पे ऑप्शन आएगी दैट हाउ मेनी मंथ दैट यू वांट टू प्रिंट योर पासबुक. 1 month, 3 months, 6 months, each and everything. For example, you have clicked a button for a 6 month. तो 6 month में जैसे क्लिक करोगे बैंक विल एटीएम मशीन क्या करेगी, पासबुक को इंसर्ट करेगी. फिर आप बाहर निकालोगे, आप नेक्स्ट पेज ओपन करोगे, फिर से आप करोगे, वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, फिर से आप करोगे, नेक्स्ट पेज करोगे, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी. तो तब जाके आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बैंक ने आप पे कौन कौन से चार्जेस लगाए थे. उससे पहले कभी भी आपको कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी. तो यही वो सीन होता है कि ट्रांजैक्शंस आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड बाय अ बैंक. चाहे वो कोई चार्जेस हो जिसको आप बैंक ने डिडक्ट किए, चाहे एटीएम चार्जेस या चेकबुक चार्जेस, या फिर बैंक ने आपको कोई इंटरेस्ट दिया. ओके, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग 5 लाख रुपीस इन योर बैंक अकाउंट. ओके, सो बाय एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ का केस में, यानी कि 31st ऑफ मार्च को बैंक आपको क्या लेगा, इंटरेस्ट. ओके, फ्रॉम अप्रैल टू जून, तो 30th जून को बैंक आपको क्या लेगा, इंटरेस्ट. यू विल गेट सम इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. सो इन दिस वे इंटरेस्ट रेट दैट वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक जनरली वेरी फ्रॉम 3 to 4% पर एनम. तो ये होता है वो इंटरेस्ट जो बैंक आपको प्रोवाइड कराएगा. ओके, सर मशीन में कैसे पता चलेगा कि किसका अकाउंट की पासबुक है? ओके, इट्स अ वेरी इजी थिंग. ओके, दिलबाग सिंह, whenever you visit a particular bank, you have to enter your customer ID number that is printed on your passbook. Or nowadays a bank has some barcode information. यहाँ पे कुछ ऐसे barcodes बने होते हैं. Clear? So you just will enter those passbook in your particular machine. Bank will automatically scan this barcode. That refers to that particular individual ID. Clear? तो उसी बेस पे भी आजकल मशीन ये काम कर रही है. क्लियर दिलबाग? इज इट क्लियर टू यू? ओके, वेरी गुड. ओके, तो ये इंटरेस्ट भी बैंक ने, फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपीज इंटरेस्ट दिया तो वो ऐड था, और इट मीन 2000 रुपीज इंटरेस्ट था, वो भी ऐड था. बट आपने क्या किया था, यू हैव नॉट रिकॉर्डेड दिस ट्रांजैक्शन इन योर कैश बुक because you are not aware about that. How will you get this information? When you will visit a bank, then you come to know that you must have to add these charges and you also have to deduct these charges for a relevant month. तब जाके आपका क्या होगा, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस भी मैच हो जाएगा. Is it clear?
A second thing is that transactions which are directly recorded by a bank, तो वो भी ट्रांजैक्शन को आपने क्या करना है, या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है. क्लियर? Okay. So after that, third and final stage is that third and final stage of this thing, the errors arise, errors or omission. Now what is omission? It means skip. Skip means you forget to enter a value. Okay. So sometimes error can be arise just because of this thing, or you can write down a wrong value. Errors may be just because of wrong values. For example, in your passbook you want to enter 7143, but by mistake instead of that you have entered this value 7413. So in this case you have to enter a right value and you also have to deduct a wrong value. या तो आप डिफरेंस को करो प्लस या माइनस, या फिर आप रॉन्ग वाली वैल्यू को करो डिलीट और राइट वाली वैल्यू करो ऐड. क्लियर? So these are the some errors or some reason behind that why your cash book balance is not matched with your passbook balance. Clear? The first part of this movie, my movie name is Bank Reconciliation Statement. Is it clear to you? Yes. Okay, very good. Okay, now next thing is that we know that as earlier we have also done in this chapter we are having 4 cases. Okay. Now from today onwards हमारे इस चैप्टर का मेन जो होगा क्लाइमैक्स वो स्टार्ट होने जा रहा है. क्लाइमैक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ओके. केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 and case number 4. Clear? But today we are going to start with case number 1 only because this chapter is totally I think we can say that it's a very easy chapter because आपको इसमें कोई ज्यादा मैथमेटिकल रूल्स नहीं फॉलो करने. आपको जस्ट क्या करना है, या तो आपको प्लस करना है, या तो आपको माइनस करना है, या तो आपको डिफरेंस लेना है. ओके. या तो आपको वैल्यू को करना है स्किप. बस ये 4 चीजें आपने कर ली तो आपका चैप्टर या तो आप 8 मार्क्स ले सकते हो इजीली, और यू कैन आल्सो गेट 6 plus 4 marks. 6 marks, 1 question and 4 marks, another question. So that's a very easy thing. That's how we have to prepare this chapter. The importance of the weightage of this chapter is very high weightage. क्योंकि एक ही चैप्टर में अगर आप मान के चलो 10 मार्क्स का आ गया, 10 मार्क्स आउट ऑफ 80, so it means आपकी देखो परसेंटेज क्या होगी, मोर देन 10%. ये तो बड़ी ज्यादा परसेंटेज होगी आपकी. क्लियर? तो आप इसको इजीली करो, चैप्टर कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. Plus, minus, difference or skip. Only these 4 rules are applied in each and every case. Case number 1, case number 2, case number 3 and case number 4. If you can easily understand the case number 1, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं अगर आपको केस नंबर 1 क्लियर हो जाता है बेटा, then 2, 3 and 4 is very easy for you. इसमें कोई ज्यादा चेंजेस तो है ही नहीं. क्लियर? सिर्फ एक आधी ट्रांजैक्शन होगी जो हमने प्लस करनी है या स्किप करनी है. इस तीनों केसेस में कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा इन दिस केस. सो प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली. ओनली आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई द केस नंबर 1 टू यू, ओके, इन डिटेल. इफ यू आर हैव एनी डाउट इन दिस केस, ओके, देन यू कैन चैट हियर, you can reply here. Clear? Without any hesitation. So class, now I'm going to start with case number 1. तो ये बड़ा ध्यान से देखना कि हमें कैसे करना अभी. And one more thing is that at 12:10 we are also having the accountancy period. Okay, तो उस पीरियड में भी हम यही चैप्टर को क्लैरिफाई करेंगे.
at sharp 12:10. So class, please open page number, everyone, page number 12.10, ताकि आपको रूट जो है वो साथ साथ क्लियर होते रहे. पेज नंबर 12.10. ओके, the case number 1. Now case number 1, what the information is available at the beginning of a question. So at the beginning of a question we are having a favorable balance as per passbook. Okay, it means we are having this information, a favorable balance as per passbook. Okay, passbook? No. Firstly, we are going to start with cash book, not with passbook. A cash book. That is case number 1. Okay. Favorable balance. This balance is also known by a debit balance. Clear? A debit balance as per passbook. आपके पास ये information available होगी. For example, A, B, C, D. That is your favorable balance at the beginning of each question. Favorable balance as per passbook. Then what's the rule that you have to follow? अब ये rules आपको बताएंगे कि आप या फिर आपने प्लस करना, माइनस करना, स्किप करना या फिर डिफरेंस लेना. ओके, क्लियर? सो इन दिस केस द फर्स्ट थिंग इज दैट वही हमने जो किया था. फॉर एग्जांपल, चेक तो आपने इशू किया, चेक इशू, क्लियर, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड. इज इट क्लियर? तो यानी कि चेक तो आपने इशू कर चुके हो, बट यू हैव नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर इट्स पेमेंट. अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की. तो इस केस में क्या होगा, आपके बैलेंस कैश बुक में क्या करोगे, उसको प्लस कर दोगे, बिकॉज आपका तो वो बैलेंस डिडक्ट ही नहीं हुआ. सेम लाइक इन दिस वे. सेकंड थिंग इज दैट, सेकंड पॉइंट इज दैट, अगर आप इसमें करोगे, कौन कौन से आइटम्स और ऐड करोगे? Yes, anyone? Second point is check deposit. Okay, check deposit directly into the bank. अब देखो, बैंक में डायरेक्टली किसी ने चेक डिपॉजिट किया, अब उस केस में भी पैसा आपके पास अकाउंट में आ गया. इंटरेस्ट रिसीव्ड, okay, if you received any interest in this case you will also add a money. उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आप लिख सकते हो, एड. फोर्थ, फिफ्थ वन, जिस केस में भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है. फॉर एग्जांपल, बिल ऑफ एक्सचेंज, realized. So in this case you will also get your money. हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर भी किया था, जब ड्रॉई जो होता है वो पेमेंट करता है एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड. ऑन दैट केस यू विल आल्सो गेट अ मनी फ्रॉम दिस साइड. अ बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी रियलाइज्ड हियर. क्लियर? So these are the some. Okay, these are the some cases then you will get your money. You will have to add this money as per your cash book. तो इन दिस केस आपके 5 के 5 मैंने जो आपको लिख दिए, इसके अलावा भी एक आधे होते हैं, वो सिंपल होते हैं, डोंट वरी. ओके, ये तो आप करोगे ऐड किए, जहां पे आपको पेमेंट इंक्रीज हो रही है, आपके अकाउंट में पैसा इंक्रीज हो रहा है. नाउ इन द केस ऑफ लेस, अब लेस कब होगा, आपको वैल्यूज कब डिडक्ट करनी है. फर्स्ट केस है आपका चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड. इट मीन्स आपने चेक डिपॉजिट तो करवा दिया, बट आपके अकाउंट में अभी तक पैसा ही नहीं आया. तो इन दिस केस आप क्या करोगे, लेस. क्लियर? सेकंड थिंग इज दैट इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक. इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय अ बैंक.
उस केस में भी अगर बैंक ने आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज किया तब भी लेस होगा। थर्ड केस, बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई और चार्जेस लगाए आप पे, ATM charges, checkbook charges. In that case, you will also have to deduct these values. And after that, dishonor of a bill. अब वही हो गया, जब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज हो गया, बिल रियलाइज हुआ तो पैसा आया, बिल डिसऑनर हो गया तो पैसा नहीं आया इन दैट केस. ओके, so last any other point if you want we can also check that. Okay, अगर बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया आपका बैलेंस, रॉन्गली डेबिट, ओके, so in that case you will also have to deduct these values. इस केस में अगर क्रेडिट होगा, रॉन्गली क्रेडिट बाय अ बैंक, तो ऐड हो जाएगा. ओके, तो ये भी एक नॉर्मल सा था, बैंक अगर रॉन्गली क्रेडिट कर रहा है तो वो ऐड कर दोगे, बैंक अगर रॉन्गली डेबिट कर रहा है तो वो माइनस कर दोगे. ओके, तो दीज आर द डायरेक्टली पेमेंट बाय अ बैंक. ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है, ये बड़ा कॉमन भी होता है. इन दिस केस डायरेक्टली पेमेंट बाय अ बैंक, डायरेक्टली पेमेंट बाय अ बैंक on the behalf of the customer, on the behalf of a customer. अब लास्ट पॉइंट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल यू हैव ओपन आरडी अकाउंट इन योर रिस्पेक्टिव बैंक. अब बैंक क्या कर रहा है, डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट से या फिर आपके करंट अकाउंट से पैसा पेमेंट कर रहा है आरडी अकाउंट में, शिफ्ट कर रहा है. उस केस में भी आपकी पेमेंट की है बैंक ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में से, तो वो भी पैसा आपका डिडक्ट होगा. Second example is that, for example, you have a LIC insurance, okay, and you want to pay your insurance premium on a monthly basis. मैंने बताया था अगर मंथली बेसिस का केस आता है तो बैंक आपसे एक फैसिलिटी लेता है ECS, जिसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बैंक विल डेबिट योर अमाउंट, ओके, डेबिट योर अकाउंट एंड इमीडिएटली मेक अ पेमेंट ऑन योर बिहाफ. तो आपकी जो LIC इंश्योरेंस प्रीमियम को जो भी पैसा पे करना है वो बैंक करेगा, ना कि आपने किया. तो उस केस में भी आपका पैसा क्या हुआ, डिडक्ट हो जाएगा एंड ऑफ एवरी मंथ. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, फाइनली क्या करोगे, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ वी आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ ABCD एंड यू मस्ट हैव टू ऐड ऑल दीज वैल्यूज, द 5 केसेस, एंड डिडक्ट ऑल दीज वैल्यूज, एंड फाइनली your answer will be XYZ ABC. Okay, that is your final answer, XYZ ABC. So that is your favorable balance as, तो आपका क्या आंसर आएगा, वो बैलेंस एज पर पासबुक. ओके, बैलेंस एज पर पासबुक, जिसको आप बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस है तो वो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए. फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक. तो ये था फर्स्ट मेथड आपके लिए इन अ सिंपल वे, बड़ा ही सिंपली आपको अंडरस्टैंड करवाया. अगर कोई डाउट है किसी भी ट्रांजैक्शन में देन यू कैन आस्क हियर. ओके, स्टार्टिंग में बताता हूं, कैशबुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो डेबिट साइड होता है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक फेवरेबल. बट अ पासबुक पॉइंट ऑफ व्यू क्रेडिट अगर बैलेंस होगा तभी आपका वो फेवरेबल होगा. व्हाई? अब ये मैं आपसे क्लियर करता हूं. सेम केस, दैट इज योर पासबुक. ओके, अब कभी भी चेक करना, जब भी आपको पैसा रिसीव होता है तो वो होता है क्रेडिट. ओके, पासबुक में क्रेडिट साइड लिखा होता है, ना अगर पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है वो डेबिट साइड होता है. तो इफ योर क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन योर डेबिट बैलेंस, ओके, देन इट मींस दैट इज योर फेवरेबल बैलेंस, अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा फिगर आ रही है. यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, so first method is clear to you or not? Yes, anyone, any doubt? Students, any doubt in this first method? Very good, Dilbag Singh. Thanks for your feedback.
Now let's try to solve a question number 1 for you. Okay. So now question number 1, we are having information on 31st March 2019. A bank column of a cash book show a debit balance. Okay. So it means a cash book show a debit balance. So first information is available, but how we have to prepare a BRS statement? So listen, watch it very carefully. So I'm going to prepare a BRS statement for you. Clear? Now I'm going to prepare a BRS statement for you. A BRS statement for which month? On 31st March 2019. BRS as on 31st March 2019. Clear? Very simply, we know that particular, okay, amount details, जिसको आप बोलते हो amount details, okay, and finally what you have to note down here? Amount, a final amount. So by this way you have to note down this information, a particular amount detail and a final amount. So first information is available here, balance as per cash book, that is your debit balance as per cash book. So that is the way that how we have to attempt this question, very easy form. अगर debit balance है तो you know that is your positive way, that is 40,000 rupees, ये आपकी plus में information. Okay? अगर ये होता credit balance तो आपने just क्या करना था, brackets में लिख लेना था. If it is unfavorable or a credit balance as per cash book, then you have to write down in a bracket form. Clear? But यहाँ पे हमारे पास debit है, then we have to note down by in this way, in a positive way. Now the first transaction, check of Sham 9,000, Mohan 15,000 were deposited into the bank, but were not collected up to 31st March 2019. So check deposit but not collected. तो ये तो माइनस वाली इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे मैं थोड़ा गैप देता हूँ ऐड के, यहाँ पे मैं करता हूँ लेस, क्योंकि जितनी भी माइनस वाली ट्रांजेक्शन होगी वो मैं नीचे लिख रहा हूँ और ऐड वाली ऊपर, चाहे आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस. ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है कि हाँ ये ऊपर ही लिखना है या नीचे लिखना है, इट्स योर चॉइस दैट वेयर यू हैव टू नोट डाउन दिस वैल्यू. पहले है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड. Okay, check deposit but not collected. In this case, the name of the individual is Mohan and Sham. Mohan and Sham. Okay, the amount is 9,000 and 15,000. 9,000, 15,000. अब ये देखिए हमने क्या करना, डिडक्ट करना. So what we have to do, we have to note down 15 or 19, 24,000 in a bracket. Clear? First point. Second, Ramesh, a debtor, deposit a check 8,000 directly into the bank. अब रमेश ने क्या किया, डायरेक्टली डिपॉजिट की मनी इनटू द बैंक. सो व्हाट विल बी द प्लस और माइनस? अगर रमेश आपके अकाउंट में डायरेक्टली सबमिट कर रहा है पैसा, तो आपके अकाउंट में पैसा आया या गया, प्लस और माइनस? Ramesh has directly submit a money into your bank. Amount is 8,000. Just no, type here plus or minus. Directly deposit into a bank amount plus 8,000. Clear? First point.
Second table, bank had credit interest of 500 which has not recorded into the cash book. Now, very good, Dilbag, Muskan, Rajpreet, very good. Thanks for your feedback again. Okay, now bank has credit interest of 500 rupees. बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट, यानी कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया 500, बट यू हैव नॉट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक, बट अभी तक आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया. तो इन दैट केस यू हैव टू रिकॉर्डेड हियर. फॉर एग्जांपल, अगर बैंक में इंफॉर्मेशन होती बैंक हैज क्रेडिट इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीस एंड यू आल्सो हैव रिकॉर्डेड इट, ओके, तब आपने उसका कुछ नहीं करना, आपने स्किप करना था, बिकॉज इंटरेस्ट बैंक ने दिया और आपने रिकॉर्ड भी कर चुके हो. बट जब आपके पास वर्ड और नॉट रिकॉर्डेड, देन यू हैव टू रिकॉर्ड इट. ओके, क्रेडिट इंटरेस्ट अमाउंट 500 rupees. Clear? Very good. And check of 10,000 rupees issued to Shadesham was not presented. Check issue but not present. Third point, check issue but not presented. So in that case, what you have to do here, students, check issued but not presented here. So in this case, amount is 10,000. That is also added. Clear? Very simply, बैंक डेबिट द अकाउंट बाय 6,000 रुपीज फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग पेड बाय. अब बैंक ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया डायरेक्टली बाय अ बैंक. तो इस केस में प्लस और माइनस, यस, प्लस और माइनस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय अ बैंक. How much the amount is? 6,000 rupees. Clear? The amount 6,000. Very good, Rajesh. Minus. Last, bank debit the account by 100 rupees as a bank charges. Bank charges 100 rupees. What we have to do? That is also minus 100 rupees. Is it clear to everyone that how we have to solve this question? Yes, anyone? Any doubt? So in this case, 40,000 plus 8 plus this, ये हो गया हमारा टोटल 18,500 प्लस में. क्लियर? 18,500 तो टोटल आ गया हमारा 68,500. क्लियर? एंड नेगेटिव साइड 24 और 6 30,100. तो यहाँ पे इसको डिडक्ट कीजिए, 30,100 को 38,400. Is it clear to everyone that how I'm going to solve this question? And this value I think was 49,000, not 40,000, 49,000. Okay, 10,000 plus 8,000, this one 18,500, 67,500. ओके, अब यहाँ पे आ रही है हमारी वैल्यू फाइनली 37,400. यस, ओके, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक. यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक. कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट और क्रेडिट? लास्ट पे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन इफ यू वांट टू राइट डाउन, यहाँ वैल्यू प्लस में आ रही है, सो दैट इज योर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस. वेरी गुड दिलबाग, दैट इज योर क्रेडिट बैलेंस एज पर योर पासबुक. So class, is it clear to everyone? Okay, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी. प्लीज बी रेडी एट 12:15 PM. Okay, so thank you so much.